बच्चों, आज हम एक्सरसाइज करेंगे आपके सामने। एक्सरसाइज इज पेज नंबर, प्लीज़ ओपन योर बुक्स, एनसीईआरटी बुक्स, पेज नंबर 141, पेज नंबर, and the question number 1 is, why is it difficult to hold a school bag having a strap made of thin and strong strings? The force exerted by the thin and strong thing is distributed to very less areas, and hence the force applied due to drag is more, and the pressure exerted on the body by the thin straps will be more, hence will be more painful, as the pressure is inversely proportional to its area. देखिए, pressure is inversely proportional to its area, ये बताया गया। अगर एरिया ज़्यादा होगा तो लेस प्रेशर लगाना पड़ेगा, इसलिए जो उसके स्ट्रैप्स होते हैं वो हम लोग ज़्यादा बनाते हैं चौड़े, क्योंकि अगर पतले स्ट्रैप्स बनाएंगे तो एरिया कम होने की वजह से उसका एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा। दैट्स वाई वी विल डू दैट वे, कि इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। इज़ दैट क्लियर चिल्ड्रेन? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू यू मीन बाय बॉयंसी? बॉयंसी हम ऑलरेडी आपको लिखवा चुके हैं, आप चाहे तो वो लिख लें, फिर से रिपीट कर दिया है। Therefore, force exerted by any of fluid, liquid or gas or on an object is known as upthrust or buoyancy. Now the next is, why does an object float or sink when placed of the object of water, placed on the surface of water? तो इसमें क्या है, वाई डज द ऑब्जेक्ट, क्या होगा ऑब्जेक्ट जब फ्लोट करेगा कि सिंक करेगा जब उसको सरफेस ऑफ पानी में रखा जाता है। इसको हमने बहुत बताया हुआ है, फिर भी आप देख लीजिए। यहाँ पे क्या है, व्हेन द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वाटर रिसाइड्स द फ्लोट और सिंक ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द वाटर, द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ लेस देन द डेंसिटी ऑफ द वाटर, देन द ऑब्जेक्ट विल सिंक। और यहाँ पे क्या है, इफ़ द डेंसिटी ऑफ, यहाँ लिखा नहीं, हमें लिख देते इफ़ द डेंसिटी, ये हमें लिखवाया हुआ है ये भी, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मोर और इक्वल देन द, मिस भूल के लिखना, देन द डेंसिटी ऑफ वाटर देन द ऑब्जेक्ट will float. Is that clear? Now the next is, please page number, open your books, page number 142, page number, and the question number 1 is, you find our masses of 42 gram on the weighing machine. Is your mass more or less than in 42 gram? It actually, the weighing machine measures the weight of the body as the acceleration due to gravity G is acting on a body. Hence, the mass reading of 42 gram given by the weighing machine is same as the actual mass of the body. As the mass is the quantity of inertia, it remains same. कि हमें फाइंड आउट किया है अगर 42 ग्राम वेइंग मशीन, दैट इज़ करेक्ट, कि जो वेइंग मशीन ने नापा गया है, दिस विल बी करेक्ट। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, सेकेंड पॉइंट, यू हैव अ बैग ऑफ कॉटन है, एंड अ बैग ऑफ एंड एन आयरन बार है आपके पास। ईच आर इंडिकेटिंग अ मास इज 100 किलोग्राम when measured on a weighing machine. In reality, one heavier than other. Can you say that one is heavier than say other? The heaviness of the bag can be given, the density is equal to mass upon volume पे depend करता है। Mass of the both the cotton bag and the iron bag are same, but the volume of the cotton bag is more than the iron bag, then hence the density is inversely proportional to the volume. अब देखा, अभी फॉर्मूला हमने बताया था, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन डी इज इक्वल्स टू एम अपॉन बी होता है ना बच्चों। तो डी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन बी, दैट मीन्स hence the density is inversely proportional to volume, then the bag of iron will be heavier. जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, जिसकी डेंसिटी कम होगी, जिसका वॉल्यूम कम होगा उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो डेंसिटी जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डिवाइडेड ऑफ बैग है, जिसका द बैग ऑफ आयरन इज विल बी हैवियर, जिसके कारण विल बी हैवियर हो गई है। ठीक है,
Now the next is, please open the book, page number 143. Open the book, page number 143. Now, how does the force of gravitation between the two objects change when the distance between them is reduced of half? अगर इसकी डिस्टेंस को हाफ कर दिया गया है तो उसके ग्रेविटेशन में क्या चेंज होगा? देन अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स F acting on objects inversely proportional to the square of the distance small r between them. F is inversely proportional to 1 upon r square. ये पहला वाला केस था. इज द डिस्टेंस इज r becomes r by 2 कर दी गई, हाफ कर दी गई. देन द ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा? द ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऐसे कि ये F1 F2 था ये, तो इसका 1 अपॉन r अपॉन 2 का होल स्क्वायर ऊपर चला गया, यानी कि 1 अपॉन r स्क्वायर, 4 अपॉन r स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा? जिसकी डिस्टेंस हो जाएगी, इफ़ द डिस्टेंस इज रिड्यूस, अगर डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स. आप देख रहे हैं 4 टाइम्स. इसके मान लीजिए F1 है, ये F2 है, तो ये इसको यहाँ पे ये भी लिखा था 4 इंटू F1, यानी कि पहले वाले ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या हो जाएगा? ये 4 टाइम्स हो जाएगा. इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो चल रहा है, वैसे चलने देंगे. तो क्या लिखेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम 4 टाइम्स लार्जर देन द प्रीवियस वैल्यू. क्लियर? Now the second, please read second question. Gravitational force acting on all the object is proportional to their masses. When then a heavy object does not falls faster than a light objects. इसमें है ये कि ग्रेविटेशन फोर्स एक्टिंग ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स, इसमें ग्रेविटेशन सारे ऑब्जेक्ट्स करता है, इस प्रोपोर्शन टू द देयर मासेस है. वाई देन a heavy object does not fall faster than the light object. All the objects fall on ground when the constant acceleration called the acceleration due to gravity is it is constant and it does not depend on their mass of the object. Hence the heavy object do not fall faster than the light objects, क्योंकि वो मास पे डिपेंड नहीं करता है. ठीक है, यहाँ पे मास पे डिपेंड होने की बात कर रहा था, तो दिस इज क्लियर दैट कि दिस इज डज नॉट डिपेंड अपॉन देयर मास. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज question number 3. Please read question number 3. What is the magnitude of gravitational force? Gravitational force is question mark between the earth and 1 kilogram of object in surface. Mass of the weight दिया गया, कैपिटल M ये दिया गया, स्मॉल m 1 किलोग्राम दिया गया है, और उसको इसके बाद आपकी जो रेडियस दिया गया अर्थ पे वो 6.4 10 टू द पावर 6 मीटर दिया गया है, और जो जी की वैल्यू है 6.7 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम. इसकी पावर -2 F की वैल्यू सॉल्व करेंगे, इन पूरे को जब सॉल्व किया जाएगा दैट मीन्स वी गेट 9.8 न्यूटन. ठीक है चिल्ड्रेन. नाउ द नेक्स्ट इज द अर्थ एंड द मून अट्रैक्ट टू ईच अदर by gravitational force. Does the earth attracts the moon with the force is greater than or smaller or same? क्या होगा जब अट्रैक्ट करेगा? which the moon attracts the earth. Why? According to gravitational universal law, the two objects attract each other with equal forces but the opposite direction में forces लग रहे हैं. The earth attract the moon with an equal force with which the moon attracts the अर्थ. इसके कारण क्या होगा? मून जो है द अर्थ अट्रैक्ट्स द मून विद एन इक्वल फोर्स के साथ साथ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ, जिसके कारण मून क्या होगा? अर्थ को अट्रैक्ट करेगा. इज दैट क्लियर? नाउ क्वेश्चन रीड क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 is, children, please read the question number 5 on page number 143. If the moons attract the earth, why does the earth not move towards the moon? मून जो है अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ को, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि अर्थ नॉट मूव टुवर्ड्स द अर्थ? देखिए, द अर्थ एंड द मून एक्सपीरियंसेस इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम ईच अदर. दोनों में इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है. हाउएवर द mass of the earth is much larger than the mass of the moon. Hence it accelerates at the rate lesser than the acceleration rate of the moon towards the earth. For this reason the earth does not move towards the earth. Is that clear children? कि जो इसका acceleration था वो less than था as comparison to the rate to the moon towards the earth के comparison. So this reason will show that
कि दैट्स वाई द अर्थ नॉट मूव टूवर्ड्स द मून. ठीक है चिल्ड्रेन. नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. देखिए आप लोग, प्लीज ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 144. हाँ देखिए, what happens of the force to the force between the two objects if the mass of one object is double, the distance between the object is double and triple, and the masses of both the objects are double. The first part is the mass of one object is double. अगर mass ये formula होता है, right? You all know that this formula. F is directly proportional to the masses of the objects. If the mass of one object is double, then the gravitational force is also double, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है फोर्स के. जैसे अगर मास डबल हो रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी डबल हो जाएगा. सेम ईयर द डिस्टेंस को डबल करना है, देन द डिस्टेंस अगर डबल की जा रही है, देखिए डबल कर दिया इसको, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 1/4, तो 4 स्क्वायर हो जाएगा 1/4 पार्ट हो जाएगा. सेम एज द डिस्टेंस इज ट्रिपल कर दी जाएगी, 3 का स्क्वायर होगा 9, तो यानी कि हो जाएगा 1/9 पार्ट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स. Is that clear? They all clear that all values. Now the third part is the masses of both the objects. दोनों objects के मास को अगर डबल कर दिया जाता है, तो both the objects are double, then the gravitational force is 4 times. देखिए कैसे, ये इसमें भी 2m दोनों में 2m हो जाएगा, यानी 2 to the 4m हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको हम 4 टाइम्स लिख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ये हम ऑलरेडी लिखवा चुके हैं आपके नोट्स में, इसको देख लीजिएगा. व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, ये भी लिखवा चुके हैं आपके नोट्स में, आप इसको प्लीज़ देख लीजिएगा. व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट. जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है बिटवीन द अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में, इसको कहते हैं हम लोग वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. What we say that we say that this is the weight of the object. Now question number 10. Question number 10 is Amit buys few grams gold at the pole as per of the instructions of one of his friend. He hands over the same when he meets him at the equator. Will the friend agree with the weight of the gold bought? If not, why? इसमें हिंट ये दे रहा है कि द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज ग्रेटर देन द पोल्स ऑफ द इक्वेटर. दैट्स वाई, बिकॉज दे ऑल डिपेंड्स अपॉन द वेट डिपेंड्स अपॉन देयर वैल्यू ऑफ जी. हमने इस वैल्यू ऑफ जी के बारे में को बहुत बताया था. द वैल्यू ऑफ जी ऑफ द पोल्स एट द इक्वेटर, पोल्स जी, द जी इज ग्रेटर होती है कहाँ पे, पोल्स, देन एट द इक्वेटर. Therefore, the gold at the equator weighs less than at the poles. Hence, Amit friend will not agree with the weight of the golden ball. Is that clear? Now the next is the gravitational force on the surface of the moon is only 1/6 as the strong of gravitational force on the earth. What is the weight of Newton? 10 किलोग्राम में दे रहा है ये. No. I'm really sorry, children. I missed question number 11th. Question number 11th is why will a sheet of paper fall slower than one that is crumbed into the balls. तो देखिए, the sheet of paper is crumbed into the balls, the density is increases, hence the resistance of its motion through the air decreases and it falls faster than the sheet of the paper. ठीक है, तो ये भी है इसमें, शीट ऑफ द पेपर्स को जब हम लोगों ने क्रम्ड कर दिया गया इनटू द बॉल्स में, द डेंसिटी उसकी इंक्रीज कर जाती है, हैंस द रेसिस्टेंस, जो मोशन का रेसिस्टेंस होता है वो ये डिक्रीज हो जाता है, इट फॉल्स फास्टर देन द शीट ऑफ द पेपर. स्क्रम मतलब ऐसे मोड़ के पूरा फेंक दिया गया. शीट ऑफ द पेपर के कंपैरिजन में क्या होगा, ये जल्दी नीचे आ जाएगा. Now the next is the gravitational force of the surface of the moon is 1/6 as the strong of the gravitational force on the earth. What is the weight of the Newton is 10 kilogram weight of the object and the moon on the earth. तो W इज इक्वल टू एम इंटू जी है. जी की वैल्यू 9.8, एम इज़ 10 किलोग्राम. हमने सब्सिट्यूट किया 98. द वेट ऑफ द सेम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ 1/6 पार्ट ऑफ द 98. दैट मीन्स 16.3 न्यूटन. क्लियर.
क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15 हम आपको दिखा रहे हैं बुक में। क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15 जो है ये आप लोगों को नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों का सिलेबस कट हुआ है 30% रिडक्शन, उसमें ये क्वेश्चंस भी हमारे कट चुके हैं, राइट। 13, 14, 15, 17 एंड 18 इनका रिडक्शन हो चुका है, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन इवन दैट द मास ऑफ द अर्थ इज 6 इंटू मास ऑफ द अर्थ जो दे रहा है बेटा, ये मास ऑफ द सन दे रहा है 6 से 2 × 10⁻30, मास ऑफ द अर्थ दे रहा है 6 × 10⁻24, रेडियस जो दे रहा है 1.5 × 10⁻11 दे रहा है। जी की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है, 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दी सारी वैल्यू, जब इनको सॉल्व करेंगे चिल्ड्रन देन वी गेट 3.f की वैल्यू आ जाएगी 3.57 × 10⁻22 न्यूटन। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये प्लीज़ इसको कर लीजिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिएगा, सब लोग खुद सॉल्व करके देखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर हमने 17, 18 बोला कि जैसे 30% रिडक्शन में कट हो चुका है। नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 19। 19 क्या है, इन वॉट डायरेक्शन डज द बॉइंट फोर्स ऑफ ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्ज इन अ लिक्विड। तो एन ऑब्जेक्ट इमर्ज इन अ लिक्विड एक्सपीरियंसेस बॉइंट फोर्स इज द अपवर्ड डायरेक्शन। हमेशा बॉइंट फोर्स कहाँ की तरफ लगता है, in up always be in upward direction. Is that clear? कहाँ लगेगा, ध्यान रखिएगा, in the upward direction. Now the next is question number 20. Why does a block of plastic release under the water comes up to the surface of the water? क्यों अगर हम उसको अंदर पानी के अंदर भी रिलीज़ कर देते, छोड़ते हैं, तो ये भी तब भी ऊपर आ जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें दो फोर्सेस एक्ट होते हैं, बर्स्ट वन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स विच पुल्स द ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो ऊपर की तरफ प्रेस किया जा रहा है। नाउ द नेक्स्ट इज एंड द अदर इज बॉइंट फोर्स जो हमेशा अपवर्ड फोर्स ऊपर की तरफ लगता है, डाउनवर्ड नीचे की तरफ दबा दे रहे हैं, एक नीचे से पानी जो है ऊपर की तरफ लगा रहा है। इफ़ द अपवर्ड बॉइंट फोर्स इज ग्रेटर देन, बॉइंट फोर्स ग्रेटर हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स से, देन द ऑब्जेक्ट कम्स अप टू द सर्फेस ऑफ द वाटर as soon as released within the water. Due to this reason, a block of the plastic released under the water comes up to the surface of water. Is that clear? Now question number 20. Why does a block of 20 हो गया 21. The volume of 50 gram of substance is 20 centimeter cube. If the density of is 1 gram per centimeter cube, what will the substance float or sink? तो हमने मास दिया गया, वॉल्यूम दिया, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, आपका है 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द वाटर, जो वाटर के दिया गया है वो दे रहा है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दैट मीन्स द सब्सटेंस विल सिंक इन वाटर। ये सब्सटेंस क्या करेगा, इसमें सिंक करेगा, डूब जाएगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी जो आ रही है सब्सटेंस की वो ज़्यादा आ रही है एज कंपेरिजन टू द वाटर, सो द ऑब्जेक्ट विल बी सिंक। ओके, नाउ question number 22 be same as SCA. The volume of 500 gram sealed packet is 350 centimeter cube. Will the packet float or sink or not? Float करेगा, sink करेगा water में. The density जो दे रहा है 1 gram per centimeter cube. What will be the mass of the object of the mass of the water displaced by this object is this packet. Same as density is equals to mass upon volume. Mass की value है 500 upon 350. That means we get 1.428. This is also more than 1 gram per centimeter cube. तो बताइए क्या होगा, ये भी object will be sink. Hence it will sink in water. पानी में ये भी क्या हो जाएगा, डूब जाएगा. The mass of water displaced by the packet is equal to the, इसका मास क्या होगा, displaced by the packet is equal to the volume of the packet of 30. कितना पानी उसने डिस्प्लेस किया होगा, कितना किया होगा, 350 ग्राम. 350 ग्राम, क्योंकि 350 ग्राम ही इसका वॉल्यूम दे रहा है, तो जितना पानी डिस्प्लेस करेगा वही इसका क्या हो जाएगा, मास बन जाएगा. इज़ दैट क्लियर चिल्ड्रेन? तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा लेक्चर आपको. आज इसका ये चैप्टर एक्सरसाइजेस सब फिनिश हो गई. इसके अलावा फिर भी आपको कुछ पूछना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, अभी टाइम है आपके पास. थैंक यू गर्ल्स.